No. So I will teach you basically in electrochemistry, what we study is the transformation of energy. So we have chemical energy in form of reactions, and we use whatever chemical energy is in a reaction. For example, when you react some molecules, it will be either exothermic or endothermic. So when it is exothermic, it will give out some energy. When it gives out that energy, we will conserve it in the form of electrical energy. Okay? Will form electrical energy. We'll store it in the form of electrical energy. So chemical energy से electrical energy का conversion transformation, and there will be some non-spontaneous chemical reaction where we have to give energy, and we will be giving energy in the form of electrical energy, and then doing the chemical reaction. So in that we are going to see that electrical energy is getting converted to chemical energy. यहाँ पे basically दो cell पढ़ते हैं. Cell is anything that has the ability to transform one kind of energy to another kind of energy. ठीक है. So for example, if we talk about our mobile phones, so in mobile phone we have एक तो बैटरी होता है, ठीक है ना. So that battery, it has some power, and with that power, with that energy, what we can do, we can see videos, है ना. So basically it is light energy. We can hear some audio, so it will be sound energy. And similarly, many things we can do. So what is happening, transformation of energy is happening. So whenever transformation happens, so we will have two different types of cell. One cell is known as electrochemical cell. Electrochemical cell. So in this electrochemical cell, we use the chemical energy. That means any spontaneous reaction we are having, that spontaneous reaction, we are going to convert the spontaneous reaction, the energy we are getting from spontaneous reaction, to electrical energy. So chemical energy से electrical energy में transformation इसका होगा. And next we have electrolytic cell. Electrolytic cell. Electrolytic cell, we are going to understand how electrical energy can be used to get some chemical reaction which are non-spontaneous. So non-spontaneous reaction, they will require some kind of energy, and that energy is being provided by electrical energy. And there is one more topic in this particular chapter that we have to study regarding the conductance. Now, conductance we have studied in metals. That metals, they have a conducting property, the property of conductance. But in this case, we are going to talk about electrolytic conductance. That means conductance due to ions. Due to ions. So this whole chapter is divided into three sections: electrochemical cell, conductance, and electrolytic cell. Okay. Although this seems very, what people say, related to each other, but these topics are not very much related to each other. So in electrochemistry, if you are done with electrochemistry, you can start any thing. You can start with conductance, you can start with electrochemistry, we can start with electrolytic cell. There is no issue in anything. Okay. But I'm going to start in this way. I will first of all teach electrochemical cell, then I will teach the electrolytic cell, and thirdly, we will talk about the conductance. Okay. Electrochemical cell and electrolytic cell, they're somewhat related, but again, you don't require anything from electrochemical cell to learn, in order to understand the electrolytic cell. So starting in electrochemical cell, the first cell that we have to learn is known as Daniel cell. Daniel cell in this, अब देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं कि we just know what is happening, how it is happening, why it is happening. उस पे अभी I cannot discuss too much because of less time, है ना? Because in 7 minutes the students of the batch, they are going to join. इस वजह से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए कि क्या हो रहा है सर में, देन क्लास आप कम से कम समझ में आ जाएगी. ठीक है. See, so the first thing that we are going to take in this, we are going to have, suppose, some or in this cell, we are going to have a rod, a metal rod, and let's suppose this metal rod is made up of zinc. So if it is made up of zinc, we are going to take solution of ZnSO4. उसी का solution लेना है, zinc ion होना चाहिए. Similarly, we are going to take another rod in the another compartment, that is here, and in this compartment, we are going to take the rod of copper. We are going to take the rod of copper. And here we are going to take a solution of copper ion. And in this case, we are going to take for CuSO4. CuSO4. Okay.
And we are going to connect these two compartments, the zinc compartment as well as the copper compartment, with a wire. So just have some patience, so that I will explain what is happening. Now, in this, we are going to add a bulb, which has a resistance type of thing. So anything that has some resistance, so bulb will also have some type of resistance. Now, अब ध्यान से सिर्फ आपको ना भी चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, that what is happening in each of these compartments and everything. लेकिन धीरे धीरे आपको ना फिर बाद में समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द जिंक कंपार्टमेंट एंड वी हैव द कॉपर कंपार्टमेंट। इन जिंक कंपार्टमेंट Zn, it has tendency to lose electron. जैसे कि we have sodium atom. Sodium has a tendency to lose electron and become Na positive, but it will become Na positive only if it has nearby some atom which has tendency to gain electron. So if sodium is near chlorine, chlorine has tendency to gain electron, sodium has tendency to lose electron, and in that case what we can say that sodium will lose electron and chlorine will gain electron. Here if I compare zinc and copper, then zinc की tendency होती है to lose electron and copper की tendency होती है to gain electron. ठीक है, so copper has a tendency to gain electron and zinc has a tendency to lose electron. So what will zinc do? Zinc is going to lose electron. Okay. Now when zinc loses electron, it will lose like this. Zinc gives Zn 2 positive and 2 electron. Now where is zinc? Tell me. Zinc is in the rod. Correct, Sadika? Yes or no? Please tell me. Keep your mic on. Can you please keep your mic on? Yes, sir. Okay, zinc is in the rod. Where is Zn2 positive? Zn2 positive is in the ion. Zn2 positive. ZnSO4 में क्या होगा? Zn2 positive and SO4 2 negative. Correct? Yes, sir. So what will happen when zinc loses electron? Zinc will get transformed to Zn2 positive. That means it will go into the solution. Zinc to Zn2 positive into the solution, and electrons are still in the rod. And in the rod, what will happen when you have electrons here? These electrons will start flowing. They will flow here in the wire and they will reach the copper compartment. So you understood what is happening in the zinc compartment? Yes, sir. Zinc from the rod is getting transformed to Zn2 positive. This Zn2 positive is going into the solution. Electrons are flowing towards the copper compartment. Make sense, Satika? Yes, sir. Now, when the electrons they reach the copper compartment, they will find copper. They will find SO4 2 negative. They will find copper 2 positive. This copper is in the rod. This SO4 2 negative and SO4 2 positive, these are in the solution, which makes copper sulfate, CuSO4. Make sense, yes or no? Yes, sir. Right. The electrons will come and it will find copper. So when it reaches copper, then copper will say that I will eat you. But electron will say, copper, you are metal. Your tendency of metal is to lose electron, not to gain electron. So copper cannot eat electrons. Then electron comes in contact with SO4 2 negative, but SO4 2 negative is negatively charged. Electron is also negatively charged. So SO4 2 negative and electron cannot interact with it. Then it comes to copper 2 positive. The copper is having a positive charge and electron is having negative charge. So obviously these two are going to interact, and there will be another reaction happening in the copper compartment, which will look something like this. Copper 2 positive, which is in the solution, it reacts with the 2 electron that is coming from the zinc compartment, and it is giving you copper solid. Now this copper solid, it will be deposited on the metal rod, because whereas this copper solid will be in the rod, this will be in the ion. Make sense? Yes or no? Please tell me till here. The Cu2 plus will be in the Cu2 plus is in the ion, no? In the solution, yeah. Okay. So electrons, it reaches the copper rod, and copper rod is dipped in the solution. So copper 2 positive and the ion, they can interact. Make sense? Yes, sir. The electrons are here. The electrons are here, and copper 2 positive is here. So copper 2 positive is in contact with the metal, and that is why it can interact with the electron also. Make sense? Yes, sir. Okay. So please see here what is happening. In the zinc compartment, Zn is getting converted to Zn2 plus. So I can say that the Zn2 plus concentration is increasing. Correct, Sadika? Zinc is getting converted to Zn2 positive. So Zn2 positive concentration is increasing. Can I say that? Yes, sir. Okay. That means I can say that positive charge is increasing in this compartment as the reaction proceeds.
positive charge is increasing. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ठीक है. In the second compartment, the copper compartment, what is happening? The copper 2 plus ion is getting converted to copper. That means in this case, the positive charge is decreasing. Make sense? Yes, Because sir. positive charge क्या हो रहा है? It is getting converted to negative. If positive charge is decreasing, can I see that negative charge is increasing? Make sense? Yes or no? Because Yes, sir. initially, I will tell you. Let us suppose we had copper 2 positive and SO4 2 negative. Right. So copper 2 positive initially it is 100, SO4 2 negative will also be 100. Both of them are equal. There is no reaction happening right now. As the reaction starts, the copper 2 positive will decrease. It will become 90. It will be 100. Then it will become 80. This will be still 100 because SO4 2 negative is not reacting with anything. But copper 2 positive is reacting. And this will become then 60. Yes, sir. This will be 300. Right. So you can see that negative charge is more than the positive charge. So I can say that in zinc compartment, positive charge is increasing. In the copper compartment, negative charge is increasing. Makes sense till here, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now please understand. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा. ठीक है, please ध्यान से सुनिएगा. Electrons were flowing from zinc compartment to complete the sentence. Electrons were flowing from zinc compartment to which compartment? कहाँ से कहाँ जा रहा था इलेक्ट्रॉन? From the zinc compartment to the copper. हाँ, कॉपर कंपार्टमेंट. फिर से बोलिए पूरा सेंटेंस को. Electrons are flowing from. The electrons are flowing from the zinc compartment to the copper compartment. Can you please repeat that once more? एक बार बस last one. The electrons are moving from the zinc compartment to the copper compartment. Very good. So we have established that the zinc compartment, the electrons are moving from zinc compartment to the copper compartment. But now what will happen? The electrons will say, wait a second, what is happening here? Why I am moving from electrons are negative. So why I am going towards a negative compartment? Because after a while, this whole compartment will be what? Negative. And when the electrons will reach here, they will find negative and negative, they will repel each other. And once they repel each other, then what will happen? The electrons will stop flowing and zinc compartment will say, wait, electron, where are you going? I am the positive charge. Why are you moving towards the copper compartment where there is negative charge, right? So zinc compartment will not let the electrons flow because zinc compartment has become positive now. Copper compartment will not accept any electrons because it has become negative. Make sense, yes or no, Satika? Yes, sir. So the electrons flow will stop, but we have to conserve, we have to store some electricity. So what do? We have to have a work around this part, no? That we have to make this is positive, this is negative. We have to make them neutral. And that is why we add something that is known as salt bridge. Salt bridge शायद आपने स्कूल में देखा होगा, सुना होगा. This is the reason why we add salt bridge. है? देखा तो नहीं होगा salt bridge आपने, मतलब सुना ही होगा स्कूल में, क्लास में. Yes, sir. Yes. I was going to ask you about it. हिंदी आ गई आपको या हिंदी अभी नहीं आई आपको? आती है सर. हिंदी आती है आपको? लास्ट ईयर तक तो नहीं आ रही थी. अच्छा, सही है. तो मुश्किल होती है थोड़ा सा. Okay, fine. See it. So we have a salt bridge, and then in the salt bridge we are going to put some salts. Salts, for example, KCl, where we have Cl negative and K positive. Harsha, Zaina, and Zeba will be starting in a few minutes. Okay, just waiting for other students to join. In 2 minutes we are going to start. तब तक आप देख लीजिए, आपको रिवाइज ही हो रहा है. लास्ट क्लास में हमने यही किया था. ठीक है. See it. So Siddhika, what will happen? As the positive charge increases in the zinc compartment, as the positive charge increases, the Cl negative will come down and it will neutralize the extra positive charge because Cl negative, here we have more positive, so positive and negative, they will neutralize each other. And as the negative charge increases in the copper compartment, the K positive will come and it will neutralize the extra negative charge that has been formed. And now both compartments will be neutralized. And electrons flow will be still from zinc to copper. It will start from zinc to copper. Make sense? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना. समझ में आ गई नहीं चीजें सारी? Yes, sir. ठीक है, चलिए. Now you need to just write a few things down. देखिए, इतना आप पेज छोड़ दीजिए जरा, गैल्वेनिक सेल. ठीक है, इतना पेज छोड़िएगा जरा. How many lines we are having? 3, 3, 3, 9 lines. या डायग्राम के लिए एक पेज पूरा छोड़ दीजिए. ठीक है,
लीव वन Okay, पेज, sir. ओके, एंड देन राइट द टॉपिक डैनियल सेल, और उसके बाद ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए बस, ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए, 2 पॉइंट्स नहीं 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। स्टार्ट कॉपिंग दिस डाउन। 2 पॉइंट के लिए पहले हम करते Okay, हैं sir. डैनियल सेल। यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग देन आई विल एक्सप्लेन। आराम से लिखिए इसको। Okay, sir. ठीक है। Harsha, you will be continuing with the 2 classes. Yes, sir, it's Harsha. fine. It's fine. तो जेई की भी क्लास हो रही है, कितना हो जाएगा मैनेज? Yes, sir. अच्छा, all of your holidays are going to start from July. Yes, sir. Okay. हम पता नहीं क्यों लग रहा था जून में आप लोग को शुरू हो जाता है, बट बस जून। अच्छा, I'm telling some schools name. Just let me know if anyone is from these schools. Okay. Anyone from Indian International School Jeddah? Anyone from Indian International School Jeddah? No one is from Indian International School Jeddah. ठीक है। Sunrise English Private School UAE, Emirates से कोई है? नहीं, ठीक है। Indian International School Riyadh? Anyone from Riyadh? नहीं, ठीक है। The Central School Dubai? रियाज से आई थिंक यहिया है ना, ये बार यहिया आ गया पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम यहिया, am I audible? Yes, sir. Assalamu alaikum. यहिया, you are from, वालेकुम सलाम, you are from Indian International School? Yes, sir. Jeddah होगा. अच्छा, जिद्दा, आप जिद्दा से, ओके ओके। सो इन योर स्कूल आई थिंक सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, chemical kinetics, DNF block, coordination compounds, haloalkane. ठीक है, fine. You are going fine. That means what is going on in your school right now? ये electrochemistry. जी सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधा हो गया है. अच्छा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस में ही चाहते हैं आपके स्कूल में, तो होपफुली आपके स्कूल में प्रॉब्लम नहीं होगी हाफ ईयरली के टाइम। एंड ठीक है, आई वाज इंडियन इंटरनेशनल स्कूल रियाज, नो वन इज फ्रॉम रियाज ना, रियाज से कोई नहीं था, ठीक है। जुबैल से तो जी जायना, हाँ रियाद को हाँ, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल रियाज, रियाज, हाँ जी, रियाद, रियाद हाँ रियाद। बताइए, रियाद से हैं आप? जी सर। अच्छा, आप रियाज से हैं। अरे, हिंदुस्तानी लोग Sir, क्या है रियाद में, could क्या है? you या टेल मी। scroll अच्छा, स्क्रॉल to डाउन, the या third one? श्योर, उसके पास यहाँ तक चाहिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन। Okay. जायना, यू आर फ्रॉम रियाज। देखिए, हिंदुस्तानी लोग वलद जालीन कहते हैं ना, वलद दालीन तो उधर अरबिया में कहते हैं ना, तो हम तो रियाज बोल लेते हैं जनरली, ठीक है। रियाज है तो व्हाट, जाल है, क्या है उसमें, या फिर दौद है, क्या है उसमें? डॉट रियाज, इट हैज दौद, ओके फाइन, ओके ओके। सो रियाद, ठीक है जी, रियाद। रियाद में आपका तो ओके, मामला गड़बड़ है। रियाद में तो, रियाद में आ रहा है सोल्यूशन, देन यू हैव डीएनएफ ब्लॉक, यू हैव हैलोअल्केन, हैलोरीन, अल्कोहल, फेनॉल ईथर्स, राइट जाइना? व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर यस स्कूल सर, राइट नाउ? वी डूइंग डीएनएफ डीएनएफ ब्लॉक है ना, पूरा रायता है ब्लॉक। ओ। तो ठीक है, चलिए, उसके बाद वो हैलोअल्केन, हैलोरीन करेंगे, उसके बाद वो अल्कोहल, फेनॉल ईथर्स करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट।
हाफ ईयरली का जो सिलेबस है ना उसके लिए वेट फॉर समर वेकेशन है ना, आपका हाफ ईयरली होता है सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में. Okay. ओके जैना, अकॉर्डिंग टू माय लास्ट ईयर्स डेटा, Yes. फाइन, आई हैड अ स्टूडेंट वाज दिस मीर हुसैन अली. ठीक है. And after that, Central School Dubai. Anyone from Central School Dubai? No one from Central School Dubai. Jubail, we have Harsha. Anyone else from Jubail? International Indian School Jubail. नहीं, हर्षा ही है. हर्षा तो आपके स्कूल में तो क्या हो रहा है? Solutions, electrochemistry, halorine, alcohol, phenol ethers. So fine, you are okay with attending both the classes. You will not be having too much load in the, what do we say, summer vacations. Okay. Dammam, International Indian School, Dammam Solutions. Oh, electrochemistry is not going on in your school. Electrochemistry is going on in your school, no? Achha, last year it was not happening. Last year you had solutions, then directly chemical kinetics, then halocene, halorine, alcohol, phenol ethers, and biomolecules. ठीक है. Right now, Noha, Mariam नहीं है. Mariam, Zeba. Zeba is also in the same class, no? Electrochemistry चल रहा है सब में? Yes, Noha, tell me. Zeba, tell me. So we started chemical kinetics. Oh, Mubarak ho. Congratulations. What about Zeba? Zeba भी same class में ना? No, Yes, sir, Zeba. She's different class. Zeba, what's going on in your class? The same as Nuba's Yeah. class. Chemical kinetics. Yes, sir. Okay. Siddhika, you are also in Dammam only, na? Yes, Kहीं sir. और है आप? What's going on in Hey, your Daman, school? sir. Sir, we're doing electrochemistry. You're doing electrochemistry. Yes, You both sir. have different teachers? Siddhika, Noha, and Zeba, you guys have different teachers. Yes, sir. I think we're in Yes. different sections. So you guys are in different sections. ठीक है. So maybe chemical kinetics is going on right now for Noha, Zeba, and maybe Mariam. Can someone please message Mariam, Noha, Zeba, anyone? Yes, sir. And but you will be taught electrochemistry, hopefully, you know, because in half yearly, I hope Siddhika, Noha, and Zeba, you guys will not be having different question papers. The question paper will be the same. So right now or sooner or later, electrochemistry will be going on. Okay, fair. Moving on to Qatar. MES Indian School. Anyone from MES? There was someone from MES. Anyone from MES? MES से कोई है? Khadija, you're from MES? Modern Middle East. MMEIS. Not MES. अच्छा, Qatar. No one from Qatar? There was No. someone from Qatar. ठीक है. Fine. Indian Public School, Kuwait. Anyone from IPS Kuwait? There was one student, I think she left. She was joined some other school. Yasmin International School, Saudi Arabia. Anyone? Yasmin International? No. Modern Middle East. Khadija, Modern Middle East? Yes, sir. Model Middle East. Okay, so wait a second. Solution electrochemistry. Nothing is coming in your syllabus, Khadija. What? After What's coming? solutions. Oh, for us, They did solution. solutions Uh, and haloalkenes And- and haloarenes. okay, solutions and halocene. ठीक है. But last year the syllabus was only 3 chapters. Chemical kinetics, no, only 2 chapters. Chemical kinetics, alcohol, phenol ethers. So fair. We had 2 students, which there was only one. Madiha was from Model Middle East. You know Madiha? No idea. No. No. ठीक है. Anyone from UAE? कोई UAE से नहीं था ना? And juniors, no one from there, I guess. Indian International School, Dammam, we have already talked about this. GEMS English High School, Sharjah. No, I don't think so. Indian International School, Dammam, we have already talked. Dammam से जो बच्चे आते हैं. ठीक है. चलिए. So अभी तक तो ठीक है. I think खदीजा की भी मतलब compatibility थोड़ा सा ये हो रहा होगा. But wait till the summer vacation starts, you know.
And if you need recordings of any chapter, if you need extra classes, if you need to do any topic with me that you did not understand in school of any other chapter, you just let me know. You have just one message away from an extra class. Okay? Okay. Okay. This is for everyone. Annapurna, where are you from? Which school? Indian International School, Dammam. Achha, you are also from Dammam. So Yes. you, अच्छा है, Dammam तो ओवर पावर हो रहा है यहाँ पे. Annapurna, Noha, Siddika, Zeba. Noha and Zeba, yes. All are Sir, same section. जी. sir, I'm from New Middle East International School, Riyadh. You are from New Middle East International School. Yes, sir. Me, Zeba, Mariam, and Soha. ये दम्माम में आप लोग यस यस क्यों कर रहे थे फिर आप लोग? न्यू मिडिल ईस्ट, मॉडर्न मिडिल ईस्ट एक है और एक है न्यू मिडिल ईस्ट. न्यू मिडिल ईस्ट का तो हमको नहीं पता भाई. न्यू मिडिल ईस्ट आई डोंट हैव एनीवन. Wait a second, maybe from the previous year I will have someone. Achha, by the way, while I am talking, you can write this part also, no? Siddhika. Yes, sir. Okay. What did you say again, Noha? Which school? फिर हम नाम भूल गए. न्यू मिडिल ईस्ट है ना? Yes, New sir. Middle East. New Middle East. Yes, that's someone. Maimuna was there. New Middle East. Chapters कहाँ गए इसके? हाँ. Okay, solutions, haloalkene, halorine. Oh, okay, fine. ठीक है. So I think it will. Okay, fine. एक चैप्टर इन्होंने सोल्यूशन पढ़ा दिया, उसके बाद फिर सारा ऑर्गेनिक में चले गए, है ना? नहीं तो ऑर्गेनिक वाला बैच चलिए ठीक है, कुछ तो करते हैं. कंप्लीटली मेस्ड अप, पूरा सिस्टम ऐसा बेकार है ना मिडिल ईस्ट का. एक चैप्टर यहाँ से, एक चैप्टर वहां से. एंड आप लोग भी तो बहुत एडवांस है ना. आप लोगों को चाहिए कि स्कूल के साथ ही साथ चलना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं कर सकते हैं. स्कूल में भी मार्क्स लाने हैं, सिलेबस भी ऐसे समझ में भी आना चाहिए कैसे चलेगा. स्कूल में तो जो है आपको, ठीक है. चलिए आज की क्लास करते हैं, उसके बाद हमको कुछ देखना पड़ेगा. आई एम आस्किंग यू गाइस समथिंग, ठीक है? अगर आपने मैसेज नहीं किया हमको ना, फिर हम भूल जाएंगे, ठीक है ना? आपको पता ही मेरी याददाश्त कैसी है. मैसेज मी, अभी कर दीजिए हमको मैसेज. इफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. Yes, haloalkane, halorine are all polyethers. But there are some students where they will do haloalkane, halorine, उसके बाद they will do DNF block, ठीक है ना? So they will not do alcohol phenol ethers. तो देखना ही पड़ेगा. Message me one thing. Message me your school's name. Yes, please कर दीजिए तो सभी को. Can all of you please message? Not here. तो यहीं पे कर दीजिए, चैट नहीं कर दीजिए प्लीज. आप चैट में कर दीजिए. शॉर्टकट कोई नहीं मारेगा, ऐसा नहीं लिखेगा कोई NMES, है ना? IIS ऐसा नहीं लिखेगा, ठीक है? पूरा नाम लिख दीजिएगा प्लीज. हमको क्या पता NMES क्या होता है? तो आप लोगों को पता ना NMES क्या होता है, ठीक है जी.
ठीक है, I'm giving you some time. Message me all your school's name. इतना परेशानी है अल्लाह पर मॉडर्न मेरी रील्स इंटरनेशनल 3 बच्चों का है बस अन्नपूर्णा. Okay, अन्नपूर्णा इज इन दमाम. यही कैन यू प्लीज मैसेज इन द जूम चैट इटसेल्फ. एक बार हम यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सब बच्चों का हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगा. यस यही कैन यू प्लीज मैसेज इन द जूम चैट इटसेल्फ. ओके सर, एक मिनट. थैंक यू. In the Zoom chat itself, Zaina, please. I feel like I feel like crying every year at this point of time. Is this type of disco dance is happening in any other subject? Harsha, tell me. Khadija, Khadija, आप बताइए आप मैं कौन कर रहे थे? Yes, Khadija. She started the next chapter only. Physics is fine. Bio is also fine. So it's only chemistry. Math. Math, I didn't Chemistry take नहीं होगा much. ना? अच्छा math. Math it can happen. Maybe some people they start with integration because integration is a big portion in 12th standard. Sometimes it happens. लेकिन केमिस्ट्री में तो इतनी इंतहा है. ओ माय गॉड. एक चैप्टर ऑर्गेनिक, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक, एक चैप्टर फिजिकल. एंड द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. हाँ, आस्क योर टीचर्स ना, व्हाई सर, व्हाई आर यू टीचिंग लाइक दिस. किसी ने पूछा अभी तक स्कूल में? Yes, anyone ask their teachers like, sir, why solution? Then you are jumping to hello, jumping मत बोलिएगा ऐसे बुरा मानने. Sir, why haloalkane halogene? Sir, why not this chapter? क्या बोलेंगे आपके teachers? I have been teaching for this many years. I know how to teach. Don't tell me how to teach. So, ठीक है. I think everyone is done, ना? सबने लिख लिया? Yes, sir. We have. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 बच्चे हैं क्या सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे. 2 बच्चों ने नहीं लिखा. जेबा, आई कांट सी योर नेम. जेबा, जेबा यू हैव टू राइट. आप ऐसे नोहा और मरियम के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं. यस जेबा. Sir, my mom is on the call. अरे My mom is जूम on चैट में तो call. लिख सकते हैं. Oh, okay. नहीं, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए. जूम चैट. वैसे मेरी अम्मी भी कॉल पे रहती हैं मुझे. खाला के साथ. इट्स ऑलवेज द खालास ना. Sir, my mom is a teacher. She's talking to parents. So she's talking to parents. मेरी अम्मी तो मेरे साथ. Zeba has done. एक कोई लीव कर गया यार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, चलिए. I will now just take a screenshot so that we can do some arrangement for you guys, है ना? इतना परेशान तो भाई ये हर साल हमें तो दुनिया छोड़ देंगे हमें फिर. मिडिल ईस्ट को बच्चों को पढ़ाना तो इसमें इस वजह से ना आई थिंक आप लोग को एटलीस्ट केमिस्ट्री में ही हो रहा है वैसे तो. लेकिन यू मस्ट बी हैविंग डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आल्सो. कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं देन ऑब्वियसली यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ व्हाट आई कैन से सिलेबस शेड्यूल. कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा आपको सही से. ऐसे आप जंप मार तो नहीं रहेंगे. किसने दिमाग दिया, कब से ऐसा होने लगा? सो सिप ऑफ इट. चलिए, मूड को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं. तो बहुत खराब हो जाता है मेरा मूड ये मतलब सिलेबस का चक्कर देख के. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, है ना?
Today we are going to learn about the representation of cell. Basically, we are not always going to make, whenever we want to talk about a cell, we are not always going to make one container, two container, उसके बाद एक rod लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक rod लगाएंगे, and then I will draw salt bridge and everything. We are not going to represent the cell like this. We will have some kind of, what we can say, scheme, some representation that we can settle with, है ना? And so you will write the topic's name. टॉपिक का नाम आप आराम से लिखिए. सबसे पहले यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. सेल रिप्रेजेंटेशन. इन सेल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत छोटी चीज जो आपने शायद व्हेनेवर यू स्टार्टेड लर्निंग समथिंग ना, आपने वो चीज पढ़ी हो. सबसे पहले क्या सीखा था आपने, खदीजा? सबसे पहले आपने क्या सीखा था, बताइए तो जरा. Yes, sir. And what? In your whole learning, पूरा learning career, whole learning career, what did you learn first? Letters. बोलिए क्या सीखा था, बोलिए तो सही. Oh, letters. हाँ, लेटर्स तो नहीं सीखा होगा ना पहले. मतलब स्टार्ट क्या पढ़ना आपने, आपने बोला लेटर्स. That was the first word that came out of your mouth while you were learning. No. No. What did you learn first? Tell me. I don't remember. You don't remember, but still you must be seeing some kids na learning that first thing. What was the first thing that they learned? जब आप letters पढ़, I understand what you're trying to say, that you learned letters, but you did not call them letters when you learned letters. Now, what did you learn exactly? क्या पढ़ा था आपने? ABCD. अरे बस हो गया. सेल्फ रिप्रेजेंटेशन काफी है. ABC. What is the self representation? Whenever self representation is there, what will you guys remember? ABC. ABC. Make sense everyone? Yes or no? Please tell me. Noha, Harsha, Yahya, Zaina. Yes, sir. Yes. A में क्या आएगा? E में आएगा anode. Yes, sir. B में क्या आएगा? B में आएगा bridge. And in C क्या आएगा बताइए जरा? Cathode. कैथोड है ना. एनोड है तो कैथोड आएगा. ठीक, वेरी गुड. एनोड, ब्रिज एंड कैथोड. ठीक है. तो ब्रिज को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, ब्रिज को ब्रिज नहीं लिखते हैं, ब्रिज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, लाइक दिस. एनोड, दिस इज ब्रिज एंड दिस इज कैथोड. ठीक है. नाउ आई कैन राइट मेनी थिंग्स. ठीक है, बट उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते. द सेल दैट वी हैव मेड राइट नाउ, उसको लिखते हैं. ठीक है, थ्योरी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा ना. आई कैन राइट मेनी थिंग्स. यहाँ पे पॉइंट लिखा देते हैं. द एनोड हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट, देन द ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्टिकल्स लाइन followed by cathode half cell on the right. Separation of the two faces is shown by single vertical line. है ना. Terms like pressure of gas concentration are written in brackets immediately after writing the substance. All of these things we can write, but no. What we will do, we will practice. For example, the cell that we made, it was zinc cell, with zinc was in the anode and zinc was getting transformed from Zn to Zn2 positive. ऐसे ही हो रहा था ना. तो Zn से Zn2 positive कैसे लिख देंगे? Make sense? Yes or no? Please tell me. बोलो Yes, भाई. Yes, sir. Then we Yes, will write sir. the bridge. Yes, sir. What was happening in cathode? What was happening in cathode? What was the reaction? Can you flip the page and read the reaction? What was happening? Reduction. No, what was the actual reaction? Like Zn to Zn2 positive was conversion. So what was happening in cathode? Cu2 plus to Cu. Cu2 plus and Yeah. then Cu. Cu2 plus slash Cu. So can you see the reaction happening in zinc? Then when you have this particular part, from here you can write the anode reaction. From here you can write the cathode reaction. Make sense? Yes or no? Please tell me. Make sense? Yes, sir. So this is example number 1, how we can write the cell. Okay. Now we are going to further add on this. For example, in example number 2, what I will write? See, I will write Zn, which is solid. Then I will write Zn2 positive, which is aqueous. Then I will write bridge. Okay. Then I will write copper 2 positive, which is solution. That is why I will write aqueous. Slash I will write copper, which is solid. But there is no information gain
I mean, the first example and the second example, they are informing us about the same things. Even if they have not written zinc solid, but you have to assume zinc is going to be solid. Even if they have not written zinc 2 plus aqueous, you have to assume that zinc 2 plus is in the aqueous solution if there is nothing written. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. So in the example 1, example 2, what I am trying to show you guys, how you will be seeing the cell represented as. Okay. So you may see the first example. So you should understand what is happening. You may see the second example. You may also see something like this. Example number 3. For example, you will have Zn, which is solid. Obviously, if something is solid, it will not have any concentration because a pure thing will not have concentration. Concentration is only for solutions where you have mixture. So zinc is what? Solid. Solid is pure. And उसमें तो कुछ होता नहीं है. That is why zinc will be as it is. Zn2 positive aqueous that we represented, Zn2 plus aqueous, it may have some concentration. Or you may find, let me just ignore this aqueous. It is, आप इसको मान सकते, it is aqueous only. And here you are going to write, let us suppose 0.1 molar. Now it is telling me the solution of ZnSO4 that we took, it is having a concentration of 0.1 molar. Then next here in copper 2 positive, for copper 2 positive, you will write the concentration, let's suppose it was 0.2 molar. And then copper solid will not have any concentration because it is pure. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, please copy this down. Then everyone, yes or no? Please tell me. No, sir. Just tell me yes or no. Then I will move on. Huh? Then everyone. Anyone still writing? Yes, sir. Still not done. Some. Once again, anyone still writing? Yes or no? Anyone still writing? Yes, sir. ठीक है, आराम से लिखिए. Maryam and Siddhika, are you still writing? No, sir. All of you done? Anyone still writing? Anyone still writing? No one is writing. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए. ठीक है. Now I'm going to give you guys. Let's suppose सवाल आपके पास होगा. ठीक है. For example, something like this. You should know when you have been given a cell reaction, how to make the cell for that. ठीक है. So for example, actually one more thing that we will be understanding, as we have seen in the zinc and copper cell, that there were 2 electrons involved. So we'll talk about both the things.
We have been given a cell reaction, how to know what is the number of electrons used in that cell and how to write the cell representation. So I will give you, please write the question with me. Represent the following cell and determine the number of electrons used. Rather, involved will be better word. Involved in the cell reaction. ठीक है, जैसे जिंक और कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ ऑफ देम. So you have been given, you will be given the overall cell. Okay, so I am writing the first example A. Let us suppose you have copper 2 positive plus magnesium Mg, giving you Mg 2 positive plus copper. Okay, so this is one of the cell. यहाँ पे ध्यान से सुनिए जरा. You will identify what is happening. Okay, so can someone tell me what is happening here? From copper to copper 2 positive, sorry, copper 2 positive to copper, क्या हो रहा है? Oxidation या reduction? Reduction. Oxidation or reduction? Reduction. Very good. This is what? This is reduction. ठीक. Reduction का मतलब एनोड में आएगा या कैथोड में? Where the reduction happens, anode or cathode? Cathode. Cathode. Very good. Please keep replying, guys. Don't write now. अभी लिखने से कोई फायदा नहीं है. Right now you should reply. Yes. Magnesium. What is happening? Oxidation or reduction? Oxidation. Oxidation. Very good. So oxidation will be in anode or cathode? Anode, sir. Anode. Anode. Very good. Anode. ठीक है. Now you have A, B, C. So ठीक है ना? A, B, C. So in anode what is happening? Tell me, guys. Mg2, Mg कहाँ से कहाँ जाता है? Mg slash Mg2 positive. Yes, very good. Bridge. In cathode, what is happening? Cu2 plus 2 Cu2 plus Cu. Very good. Cu2 plus 2 Cu. ठीक है. Now we have to determine the number of electrons. ठीक है. We have to determine the number of electrons. See, I will first give you the long way, है ना? That is going to work in every cell reaction. And there is a shortcut which works in most of the reaction. ठीक है. So first of all, लंबा मेथड हम लोग देख लेते हैं. Take any of the cell, मतलब किसी cell reaction में पहले तो ये देखिए balance है कि नहीं balance है. You can see that it is balanced right now, है ना? It is balanced, yes or no? Please tell me. It is balanced, yes or no? Yes. 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 Okay. Fine. So you can choose anyone. Once the reaction is balanced, you can choose anything. Copper or magnesium. Choose anything. जिसके आंसर पहले आएगा उसी को हो जाएगा. मैग्नीशियम और कॉपर? मैग्नीशियम आया आंसर. ठीक है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व के लिए ना क्या करना आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व के लिए किसी एक को चूज कर लिया आपने. मैग्नीशियम चूज कर लिया, राइट? मैग्नीशियम. सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज देयर अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री? 1. ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय delta OS. I'm writing. What is delta OS? Change in oxidation state. Delta OS क्या है? Change in oxidation state. N is what? N is the number of moles. यहाँ पे अगर 2 रहता तो 2 लिखते, 3 रहता तो 3 लिखते, but यहाँ पे 1 है, so I will be writing 1. And what is the change in oxidation state for magnesium? 2 electrons. है ना? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है. Yes, very good. 0 2 +2. तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना. So number of electrons involved in this case will be how many? 2 electrons. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Please copy this down. हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम होंगे? N. N यहाँ पे 1 है ना स्टोइचियोमेट्री से. 1 mg है. अकॉर्डिंग टू द सेल रिएक्शन एरिया, है ना? यहाँ पे अगर 3 रहता तो 3 लिखता. अभी एग्जांपल करेंगे ना वैसा वाला जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 के अलावा कुछ और होगा. ओके. ओके सर, थैंक यू. Sir, this will be the same for copper. The number of Number of electrons. Yeah, number of electrons will be. Okay.
By the way, in order to check now whether the cell reaction is balanced or not, what you need to see is the charges. आपको copper Mg तो दिख रहा है, एक Mg एक copper है, but in the left hand side you have +2 charge, in the right hand side you have also +2 charge. ठीक है, तो charges should be balanced. If you have been given a cell reaction, जैसा कि अगला एग्जांपल कराएंगे, वहां पे ना the charge will not be balanced, so you will have to balance the charge in that case. ठीक है, वो बताएंगे कैसे होगा. बट ये ऐसा ना कभी आपको करने को नहीं आएगा कि आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ है और वहां पे आपको सेल बनाना है. जनरली क्या होता है ना, व्हाट यू विल बी आस्क्ड इज यू विल बी गिवन द सेल और उससे आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा. ठीक है, जनरली दैट इज व्हाट इज जनरली आस्क्ड. ठीक है, बट अगेन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ गोइंग फ्रॉम रिएक्शन टू द सेल एंड सेल टू रिएक्शन. दोनों का आपको कंफर्टेबलनेस होना चाहिए. यू शुड बी कंफर्टेबल इन बोथ ऑफ देम. एनीवन स्टिल राइटिंग? इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा ओएस इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. एन इज द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. बेसिकली ज्यादा सही रहेगा बोलना इसको, है ना, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. दिस इज बेसिकली आपको थोड़ा छोटा ही लग रहा होगा, लेकिन ये लंबा है ना. शॉर्टकट इसमें क्या होता है ना, शॉर्टकट में इफ यू हैव लेकिन यही यही रहेगा. चार्ज से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको. इफ यू हैव एनी स्पीशीज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, तो उसमें लेकिन आपको थोड़ा लंबा पड़ जाता है कि यू विल हैव टू सी व्हिच इज हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. बट दिस इज गुड. ठीक है, यू यूज दिस वन, ये हमेशा काम आएगा. Because you will be seeing sometimes ना इधर भी चार्ज होगा उधर भी चार्ज होगा, वैसे भी एग्जांपल्स कराएंगे. Anyone still writing? Anyone still writing? No one is writing, I guess. ठीक है, चलिए let's look at the B example. Here you are having aluminium plus copper 2 positive, and the cell reaction is something like this. It is giving, let us suppose, aluminium 3 positive plus 3 plus 3 positive तो लिख दिया हमने ना, प्लस कॉपर. ठीक है, now is this balanced? Yes or no? Please tell me. Is this balanced? Yes. नहीं. चार्जेस देखिए, चार्ज भी बैलेंस होगा ना. चार्ज कैन ऑल्सो बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, जैसे कि मास होता है ना, मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वैसे चार्ज को भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता. उसी रिएक्शन को हमने दोबारा लिख दिया. जी बताइए, what is the total charge in this side? लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है? बोलो भाई. अरे टू है भाई, लेफ्ट में 2 है ना. Yes, sir. हाँ, और राइट में 3 plus 3. 3. So it is not balanced ना. Is it balanced? No, No, sir. sir. No. तो याद कीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, तो उससे आपको कुछ याद आएगा. कुछ तो मल्टीप्लाई करके ऐसे करते थे ना, जब कोएफिशिएंट ऑफ x और y से बराबर नहीं रहता था, तो क्या करते थे, जिधर 3 रहता था उधर क्या मल्टीप्लाई करते थे, 2 है उधर क्या मल्टीप्लाई करें. कुछ ऐसा कीजिए, याद कीजिए. मैथ्स के जैसा थोड़ा सा याद आया किसी को? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन द एलिमिनेशन Yes, sir. मेथड टू मेक द कोएफिशिएंट सेम. तो वैसे ही सेम करना है चार्ज को. जरा बताइए क्या करेंगे. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब देखिए जरा, चार्ज बैलेंस हो गया. Yes, sir. Yes, sir. What is the total charge on the left hand side? 6. 6 है ना. What is the total charge on here right hand side? 6. 6. ठीक है, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसे ही करते थे ना. याद आया कि नहीं याद आया? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, उसी लॉजिक है ना. मतलब उसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने के लिए जाएंगे. आप अपने गट्स को इस्तेमाल कीजिए. इफ यू आर हैविंग डाउट देन आई विल एक्सप्लेन यू आल्सो, बट आई विल हम ज्यादा पसंद ये करेंगे ना कि यू फॉलो योर गट फीलिंग कि क्या मल्टीप्लाई करना है. यू विल बी मोस्टली करेक्ट. ठीक है, अच्छा. बट राइट नाउ यू विल सी दैट द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड नाउ, है ना. यहाँ पे 3 कॉपर, यहाँ पे 3 कॉपर करने के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए. हियर यू हैव 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. बात समझ में आ रही है? ये सुनो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Again we are going to do ABC, but please remember while we are representing the cell, we don't write the, please remember what I'm trying to say here. ठीक है ना, when we represent the cell we don't write the stoichiometric coefficient, we only write the species.
And when I say species, it involves the charge. अगर हम copper 2 positive is a chemical species. C copper 2 positive जो लिखा है ना हमने, this whole thing is not the species. Species क्या है आपका? Copper 2 positive, है ना? Species क्या है आपका? Aluminium. चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग बताइए जरा, एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है? What is happening with the aluminium? Oxidation. Oxidation. sir. Oxidation. Very good. Oxidation मतलब कहाँ जाएगा? एनोड या कैथोड? Anode. 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 Very good. What is happening with the copper? Reduction. Copper के साथ क्या? Cathode. Reduction. Copper के साथ. Reduction, sir. Very good. Very good. Very good. Copper में reduction हो रहा है. So reduction, that means it will go to Cathode. 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 Very good. ठीक है. तो एनोड में क्या लिखेंगे बताइए जरा. Can you please tell me what should I write in the anode? Al Al A. slash Al Al slash plus. Al3 plus. बाकी लोग को नहीं जवाब देना है. And then bridge. बाकी बताएंगे. सिद्दीका या नहीं बोलेंगे. सिद्दीका नहीं, will not speak. कैथोड के लिए बताएं. बाकी लोग खदीजा, नोहा, सिद्दीका, इतने सिद्दीका नहीं. जायना, जेबा, Cu. बोलिए. plus. U2 plus Cu2 प्लस है ना, स्लैश Cu. U. ठीक है, देखिए नहीं बोलने का नतीजा देख रहे हैं. हाउ मच, कितना ज्यादा आप लोग अभी डिस्कम्फर्ट में है, जल्दी बोल नहीं पा रहे हैं, है ना. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. चूज अ स्पीशीज, चूज अ केमिकल स्पीशीज. एल्यूमिनियम या कॉपर, किसी को भी चूज कीजिए. Aluminium. एल्यूमिनियम. ठीक है. हाउ मेनी, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोस्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है एल्यूमिनियम के लिए? 2. 2. 2. Okay. And what is the change in oxidation state for aluminium? 3. 3. 3. कितना हो गया? 6. 6 इलेक्ट्रॉन्स. लेट अस सपोज ना, अभी हम लोग चूज करते हैं कॉपर के लिए, तो एल्यूमिनियम के लिए हो गया है ना. अगर हम कॉपर के लिए भी चूज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होता है. व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर कॉपर? 3. 3. व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? 1. हाँ, अरे भाई 2. 2. 1 क्या? 2 से 0 जा रहा है तो 1 होगा कि 2 होगा? 0. हाँ, 0. 0 होगा. 0 हो जाएगा. हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. 2. हाँ, 2 है ना यही. देखिए, यस यही. टेल मी. Yes, sir. कंफ्यूज हो गया क्या? 2 है पक्का? हाँ, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं. कंफ्यूज हो रहे हैं या अभी ठीक हो गया? हो रहा हूँ सर, हो रहा हूँ. अभी भी हो रहे हैं. ठीक है. ऑक्सीडेशन, ठीक है, ध्यान से कीप योर माइक ऑन. व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, टेल मी. चेंज इन Oxidation. ऑक्सीडेशन स्टेट. Oxidation. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर हियर? 2 plus 2 प्लस. और यहाँ पे कितना है? 0. ठीक है, तो 2 से 0 में कितना चेंज हुआ? 1. कितना जंप मारना पड़ेगा? ठीक है, 2 से 0 जाने के लिए कितना जंप मारना पड़ेगा? हाउ मेनी जंप्स विल यू टेक इफ यू वांट टू गो फ्रॉम 2 to 0? 2 jump. नंबर लाइन पे आ जाते हैं. 2 जंप, तो 2 हुआ ना एरिया, Yes, sir. है ना. 2 - 0 चेंज यही तो होता है. फाइन, मतलब मान लीजिए आप इसको ऐसे 0 वाज फाइनल -2. अगर हम चेंज देखते हैं तो चेंज में सीधा मॉड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे चेंज में, है ना. फॉर एग्जांपल जैसे चेंज इन वेट अगर हम बात करें तो व्हेन वी सी चेंज इन वेट वी डोंट नो वेदर इट इज लॉस और गेन, है ना. तो चेंज का मतलब होता है दैट नंबर दैट वी आर गोइंग टू सी. तो ये 2 होगा, राइट. मेक सेंस नाउ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है. So whether you take aluminium or whether you take copper, you see that the number of electrons is coming to the same because of the virtue of this particular formula, है ना. ये formula क्या कहता है? You have both the things. You have the coefficient as well as the charge. ठीक है, तो वो ऊपर नीचे हो गया, देखिए जरा, है ना. 2 into 3, 3 into 2 हो गया. ठीक है, तो you can blindly follow this particular formula. Number of electrons will be the stoichiometric coefficient multiplied by the change in oxidation state. You have to, if you put the correct value of number of, that means the stoichiometric coefficient, and if you put the correct value of change in oxidation state, then you will be getting the correct number of electrons. ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करने की जरूरत. चलिए, प्लीज राइट दिस डाउन. ये एल्यूमिनियम पे था, दिस वाज फॉर कॉपर.
Is there any doubt, guys? किसी को कुछ doubt है तो बताइएगा please. While writing, if you get any doubts, please let me know. अच्छा, by the way, again I am telling you guys, you will have to, देखिए अब यहाँ पे ना आपके पास ये सेल मिलेगा, तो सेल से आप क्या रिएक्शन लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या लिखेगा, कॉपर, बिकॉज एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड कॉपर. Now you can see that you will have to balance this particular reaction in order to get the number of electrons right. ठीक है, so for that what you need to do is you need to know how to balance the reaction with respect to charge, जैसा कि हम लोगों ने अभी किया, fine. So please understand this part, that is very very crucial. Understand how to balance how to balance the reaction when you know the charges, है ना, according to the charges how to balance it. Chलिए, please copy this down, let me know once you are done, then we will look at more reactions. Anyone still writing? Anyone still writing? Can you please someone speak? Anyone still writing? Please बोलिए हाँ या ना. Anyone still writing? No, sir. अच्छा, writing. By the way, who is getting disconnected? Zaina, are you getting disconnected again and again? Yes, sir. Why? Why, Zaina? I don't know, sir. I don't know. हर्षा, आपको समझ में आ रहा है ये सुनो, हर्षा? Yes, sir. By the way, any of you saw NEET paper? This year's NEET paper? किसी ने देखा बायोलॉजी वाले कम से कम? नहीं सर. Yes. देखा आप लोगों ने? खतीजा ने Yeah. देखा? Not the कैसा entire लगा आपको? thing. Not the entire thing. We just saw a few questions. Few We questions. discussed them. Sure. Discussed in biology classes. Yes, sir. Which class? Bio. Bio कैसा आया था? I think easy ही था. Biology was also not very hard. कैसा था biology? I don't know. Like we could You don't solve know? it. हाँ, you could solve it. Questions. Correct. Basically, in what I say, in NEET, जो important factor होता है ना, the important factor is time. है ना? Time ही बहुत ज्यादा important factor होता है. Let me see. अगर solution से तो सवाल होगा, chemistry में खास solution से सवाल. There were questions like easy questions from ये also from
क्लास 11th, लाइक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाले सवाल भी थे, बहुत ज्यादा नहीं, सॉरी, मतलब कुछ सवाल थे। एंड हेनरीज लॉ से एक सवाल है, हाँ हेनरीज लॉ वाला सवाल आप लोग कर सकते हैं। KH दिया हुआ है, यू हैव टू टेल द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, दैट क्वेश्चन यू कैन डू। देन those who have done haloalkane halorine, जैसे हर्षा ने किया haloalkane haloalkane halorine, तो वहां पे SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। देन लुकास रिएजेंट से सवाल है, एक्टिवेशन लीजिए, अभी आपको नहीं पढ़ा है। एनीवन स्टिल राइटिंग? एनीवन स्टिल राइटिंग? नो वन इज राइटिंग, ठीक। चलिए, एक सवाल कीजिए आप लोग। राइट इन दिस रिएक्शन, इसे देखिएगा, H2 प्लस Cu2 पॉजिटिव gives H plus प्लस कॉपर। बैलेंस करना है आपको खुद से, ठीक है, यू हैव टू बैलेंस इट, आसानी से बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे तो। एंड देन यू विल राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस। You will send the answers on my WhatsApp.
Yes, Harsha, correct. Very good. Yes, very good. Correct. ये सही है आपका भी. You just need to calculate the number of electrons according to any one of the species. Okay, yeah. Okay, sir. ठीक है, because दोनों में सेम ही आएगा आंसर. ओके, बेसिकली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द कंप्लीट सेल रिएक्शन वो बताना रहता है. सो यस, मरियम करेक्ट, वेरी गुड. ज़ेबा, आपका आंसर नहीं आया है अभी. अन्नपूर्णा, खदीजा, Siddika, I have not got your answer. Siddika, do you have my number? Annapurna, you just Yes, got sir. your answer. Okay. Yes, very good. Balancing भी सही किया आपने. Cell reaction is also correct. Number of electron is also correct. है ना? अब ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? वो तो लास्ट क्वेश्चन में ऐसे हमने लिखा था. सी, aluminium and copper, but you don't need to write that thing for each question. You just write the number of electrons. Okay? Just write the number of electrons. No need to write what species you are considering. वो तो बस हमने बताया आपको, ऐसा आपको तो मतलब शायद नहीं बताया गया होगा. ठीक है, so don't need to write that what species you are considering. Just write the number of electrons. Zaina, आपका आंसर. Zaina is not there. Zaina got disconnected. Okay. I'm waiting for Zeba. I'm waiting for Siddiqa, Noha. मरियम का आंसर आ चुका है. खदीजा, जल्दी भेजेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा. आके भी पढ़ना है ना? नो, आपने तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में उल्टा कर दिया. देखिए जरा सिद्दीका, एनोड के थोड़ा आपको लिखना चाहिए ना सिद्दीका. पीसी, ये सिद्दीका, Yes, sir. क्या होता है बताइए. हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए बी सी ना? Yes, sir. तो ए में क्या आता है? एनोड आता है, राइट? Yes, sir. I messed that up. एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है. व्हाट हैपेंस इन एनोड? Oxidation. यस, गॉट द मिस्टेक. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, प्लीज करेक्ट इट क्विकली. खतीजा, नोहा एंड जाइना. जाइना जस्ट गॉट नाउ गया ना. ठीक है, प्लीज. Is my number of खदीजा, electrons correct? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको शायद सही है. जी हाँ, दैट इज करेक्ट. बैलेंस भी नहीं है बाय द वे आपका, ठीक है ना? आपने बैलेंस करना है पहले. इट इज नॉट बैलेंस, प्लीज सी. Okay, sir. Yes, sir. I know. हाँ गाइस, नोहा कैन यू प्लीज ऑन योर माइक. इतना टाइम नहीं लगता है. नोहा कैन यू प्लीज ऑन योर माइक ऑन. नोहा एंड खदीजा, नोहा एंड खदीजा, कैन यू प्लीज ऑन योर माइक ऑन. Sir, I didn't have my phone with me, so I went to get it. अच्छा, खदीजा, व्हाट अबाउट यू? My mom is on the phone. योर मॉम इज ऑन. I'll look. Zeba, what about you? Okay, I'm sending 1 minute. You're sending in a minute. जल्दी कीजिए. थोड़ा ना पेरेंट्स को आप थोड़ा बोल के रखिएगा कि केमिस्ट्री वाले सर ना बहुत गुस्सा आते हैं, बहुत डांटते हैं वो, अगर मतलब आंसर जल्दी नहीं भेजने से. ठीक है ना? आंसर तो केमिस्ट्री वाले सर तो बहुत गुस्सा करते हैं, जल्दी बोलते हैं, जल्दी आंसर भेजो, इतना डांटते हैं हमको. मेरे पास फोन नहीं रहता है तो. ठीक है, फोन लेके गेम में खेलने लग जाइएगा आप लोग. ठीक है, आंसर करने के लिए सिर्फ फोन चाहिए हमको, और कुछ चीज पे नहीं. आई वांट टू सी हाउ यू आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम्स, राइट? नोहा, बैलेंसिंग इज करेक्ट. ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों सही है. तो सेल रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो करेक्ट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, वेरी गुड. वेटिंग फॉर ज़ेबा एंड खदीजा. खदीजा, आप भेज पाइएगा कि नहीं भेज पाइएगा? खदीजा, Not sure. सॉरी,
No. नो, अच्छा ठीक है, तो फिर आप आंसर बताइए हम पर, यू विल डिक्टेट द आंसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ज़ेबा टू सेंड द आंसर. Zaina, what about you? Can you send the answer? Zaina? I'm trying. Thank you. जोर से बोलिए भाई, जोर से बोलिए. I'm trying. Can you speak a bit? You're trying to do what? You're trying to solve the question, or you're trying to send the No, answer? I'm trying to send the answer. What you are trying to? क्या कबूतर भेज रहे हैं आप? किससे भेज रहे हैं आप? Phone. हाँ, फोन से भेज रहे हैं. तो फोन से ट्राई क्या करना है भाई आपको? आपको फोटो लेना और सेंड कर देना, ट्राई क्या करना है इसमें? Yes, I did take the picture. Just won't send. Like you won't receive it. अच्छा, वो जा ही नहीं रहा है. हाँ sir. अच्छा, तो देखिए शायद कुछ गलती होगी उसमें, वो आपको मतलब ऐसे मदद आ रही है ना, ऊपर की तरफ से, ऊपर से कुछ मदद आ रही है. अरे एक तो आप लर्निवियो को भेजते हैं, है ना, आपके पास मेरा नंबर नहीं है. जायना, जैसे जायना, जेबा का आया, सॉरी 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 सॉरी, जेबा का आंसर है. जेबा, आप उन्हीं को भेज दिया करें, ठीक है. Oh, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, इतनी बार आपको बोला हुआ है हमने. अभी तो जैसे आ गया, बट मे बी लर्निवियो में अगर कोई उस टाइम फोन अटेंड नहीं कर रहा होगा, इफ दे डिड नॉट सी द नोटिफिकेशन, तो दिक्कत हो जाएगी कभी, ठीक है. चलिए, लेट अस सी द आंसर. एच, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेक्ट है, रिडक्शन भी करेक्ट है, सेल रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो राइट, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो राइट, ठीक है. वो वहां पे 2 नहीं है ना, तो आपने 2 काट दिया, राइट जेबा? yes, sir. यस, अच्छा ठीक है, जेबा आपने भेज दिया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आई गॉट इट, आई गॉट इट. वेटिंग फॉर जायना. जायना का तो आ नहीं रहा आंसर, ठीक है. तो जायना एंड खदीजा प्लीज टर्न योर माइक ऑन. जायना एंड खदीजा प्लीज टर्न योर माइक ऑन. यस, बताइए, बैलेंस, इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड, यस और नो? No. हाउ शुड आई बैलेंस इट, टेल मी. 2H. 2H, hydrogen H2, and two copper reactants. Sorry. 2 रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन. अब ठीक है, अब No. ठीक है, यस और नो? No. अरे बोलो खदीजा, जोर से बोलो, No. जोर से. नो कहाँ जाएगा 2? यहाँ आएगा 2. अब ठीक है, No. अब ठीक है, जल्दी बोलो भाई, जल्दी, यस और नो? Yes, sir. No. अब क्या? नो, इट्स नॉट करेक्ट खदीजा. हाँ Oh, wait, क्या? no. 2H. It is इट इज व्हाट? correct. जल्दी करो भाई. Correct. करेक्ट है, हाँ. करेक्ट, ठीक है, पक्का पक्का, हाँ. ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? Oxidation. What is happening Oxidation. here? Oxidation. So oxidation, that means it will go to anode or cathode? Anode. Anode. सिद्धिका, I need your answer. सिद्धिका, आप करेक्ट करके भेजिए प्लीज ना. आप इंतजार कर रहे हैं क्या, हम लिख ले उसके बाद भेजिएगा? Okay, sir. सिद्धिका, Okay, जल्दी I'll send भेजिए it. जी. कॉपर 2 प्लस से कॉपर, व्हाट इज हैपनिंग हियर? Reduction. Reduction. Very good. Reduction, that means it will be what? Cathode. Cathode. Very good. ठीक है. So I will write A, this is B, and this is C. By the way, I am writing this ABC right now just to remind you guys about the real cell representation, how to represent these cells. ठीक है ना? अब ये हमेशा नहीं करना है आपको ABC, जैसे एग्जाम में बोला ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सेल में रिप्रेजेंट कीजिए. ABC आपको लिखना जरूरी नहीं है, you can write it, no problem in that, but it is not necessary to write, okay? So anode is H2 and it is getting converted to H positive. Bridge is like this, and cathode में we have copper, that is 2 positive, and then you have copper. ठीक है. Now एक चीज बस आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है ना. H2 is what? Tell me guys, solid, liquid और gas hydrogen क्या होता है? H2 गैस बोल दिया हमने, तो diatomic hydrogen. H2, it is solid, liquid और gas? Solid, liquid और gas? नहीं पता? Yes. Gas, right? So whenever you have gaseous species, na, what you don't have to do this, okay? But what you will generally see is that this H2 will be written like this, platinum.
That means when you are, was obviously H2 cannot be a metal rod. H2 का तो metal होता नहीं है. So what you will be seeing, there will be a glass rod like this. In this glass rod, you will be having a small hole which will liberate, or you are going to enter the hydrogen gas. यहाँ से hydrogen gas आएगा. And here you will be having a platinum wire, right? So hydrogen gas, it is adsorbed in the surface of platinum wire, and then the reaction happens. ठीक है, ये फिर पूरा सेल के अंदर ऐसे करके डूबा रहता है. ठीक है, इस तरह से रहता है. ठीक है, like this. So this platinum, it is what? It is just an inert electrode. It does not take part in the cell reaction, as you can see, and it is only used as the surface for the reaction. Because hydrogen cannot, it is not a metal, we cannot have a hydrogen metal rod. And that is why we use platinum wire to adsorb the hydrogen coming from the inlet. And on the platinum, hydrogen is, मतलब ऐसे surface में hydrogen. ठीक है, in the platinum wire on the surface, we have hydrogen. And that hydrogen is then reacting with the solution that is present. ठीक है, so this platinum is what? Platinum is an inert electrode. It is not doing anything in the reaction. It is just there to provide the surface for the reaction. Is that clear? Yes or no? Please tell me. बताएं. Yes, sir. Yes, चलिए, तो इसी सवाल के साथ आप देखिए, you can easily add platinum those who have done the reaction, है ना? Those who have represented the cell, H2 के पहले एक स्लैश PT कर दीजिए. ठीक है, तो platinum wire in which you have H2 and H2 से H+ जा रहा है. This is how you are going to see the cells. Okay, if you don't write the platinum, that's perfectly fine. उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं कटते हैं. But if you see something like this, please understand that platinum is not taking part in the reaction. याद रहेगा सबको? I will write this down also, but I hope you will remember this also. ठीक है. Now moving on to the number of electrons. Number of electrons. Now, number of electrons, I saw that most of you guys have chosen copper, but I will be choosing H2 in this case. ठीक है. Now, what is the number of H+ ions? We have 2 moles here. Multiplied by what is the change in oxidation state? Change in oxidation state is 1. ठीक है. Change in oxidation state कितना है? 1. So this will be equal to 2 electron. अब देखिए जरा, कुछ लोग क्या करेंगे. ठीक है. The reference point for me was H+. If the reference point is H2, तब यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से प्लीज. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना है? एक ही. आप बोलिएगा एक ही तो है. बोलेंगे यस करेक्ट. हाइड्रोजन इज ओनली 1. What is the change in oxidation state? Please understand, we are having hydrogen. This hydrogen is getting converted to H+. This hydrogen is also getting converted to H+. So, इसके लिए change in oxidation state 1, इसके लिए change in oxidation state. तो overall H2 के अंदर change in oxidation state 2 का हो रहा है. That is why I will multiply 2. बट आपको उतना कंसिडर नहीं करना है. आप जनरली आयन को ले लीजिएगा, है ना? इतना ज्यादा तो आप सोच नहीं पाएंगे. इतनी छोटी सी जान, इतना छोटा सा दिमाग आप लोगों का. You will choose this H+ and then you will do. उससे बेहतर जो आप लोगों ने किया वही कर लीजिएगा कि कॉपर को चूज कर लेते हैं, एंड आफ्टर चूजिंग कॉपर यू कैन इजिली फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आप लोगों ने किया. ठीक है, चलिए प्लीज दिस जस्ट ऐड दिस प्लैटिनम एंड राइट अ पॉइंट हियर. Platinum is an inert electrode which is used to provide surface for the reaction. Yes. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. 1 मिनट सर. जी बिल्कुल. ज्यादा टाइम नहीं लग गया इस बच्चा. आप लोग के आंसर का इंतजार करते करते बहुत टाइम लग जाता है. Done, sir. यस जाइना, दिस इज करेक्ट. आपका आंसर आ गया. ठीक है, चलिए. अब दूसरा क्या है ना आपके पास,
दिस इज तो वी सॉ हाउ टू गो फ्रॉम रिएक्शन टू सेल। अब दूसरा हम लोग को क्या करना है, आई विल गिव यू रिएक्शन एंड फ्रॉम रिएक्शन यू विल राइट द एनोड सेल, एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है, एंड देन यू विल राइट द ओवरऑल सेल, देन यू विल राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू सम प्रॉब्लम्स एंड उसके हिसाब से आप लोग कीजिएगा जरा। ठीक है, सो आई विल राइट अ क्वेश्चन, राइट the anode, cathode and net cell reaction, overall cell reaction मतलब, for following cells and indicate number of electrons involved in the following cell। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए देखिए जरा। Let us suppose you have been given a cell like this. You have nickel, which is getting converted to nickel 2 positive, and you have a rod here. अब इसके बाद क्या ले लीजिएगा, Ag पॉजिटिव Ag। ठीक है, इसको हम करते हैं, आपको समझिएगा। So tell me what metal is in the anode, निकल या सिल्वर, क्या है एनोड में? Nickel. एनोड में क्या है बताइएगा जरा। यस, वेरी गुड, निकल। ठीक है, चलिए, निकल, it is giving nickel 2 positive oxidation, that means there will be loss of electrons, that means electrons will be on the product side, है ना, प्रोडक्ट में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लॉस का मतलब। nickel 2 positive and how many electrons will be, guys? How many electrons will be involved here? बोले यस, 2 electrons। ठीक है, तो एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, देन वी विल राइट कैथोड, व्हाट इज प्रेजेंट इन कैथोड, निकल और सिल्वर, कौन है कैथोड में? Silver. ठीक है, आंसर आना चाहिए सबका। ठीक है, जितना आप आंसर करेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट आंसरिंग इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। ठीक है ना, आप दूसरे के आंसर का इंतजार करते रहेंगे सिर्फ, बहुत दिक्कत होगी। आप बोलिए आंसर्स को। ठीक है, जो भी आ रहा है ना, आप प्लीज आंसर्स बोलिए। तो कैथोड में व्हाट आई विल राइट, टेल मी गाइस, क्या लिखें यहाँ पे हम? Ag plus. Ag प्लस। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड आई यूज? 1. One. What? One electron. Yes, it will give you Ag solid. Now, are the electron balanced? Do we have the same number of electrons in anode and cathode? No. No, no. So I will multiply 2. So if I multiply 2 in the cathode, I will get 2 Ag positive, 2 electrons and 2 Ag, right? Now it is balanced, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now we can add the cell reaction of anode and cathode. The 2 electrons and 2 electrons will be cancelled. You will get nickel plus 2 Ag positive, giving you nickel 2 positive plus 2 Ag. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now, once you have written the cell reactions for anode and cathode, the number of electrons that you are cancelling, na, 2 electron, तो यहीं से आपको number of electron पता लग सकता है। Number of electron for this cell reaction is equal to how much? It will be equal to 2 electrons. ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज you already have this formula जहां से आप पता लगा सकते हैं। बट जितने इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर रहे हैं ना, 4 मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैथोड खा रहा है। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होता है? फ्रॉम एनोड टू कैथोड, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। So from nickel, what the 2 electrons are coming out, Ag is eating those 2 electrons only. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मत कर देना भाई, प्लीज। हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा लेकिन हम हाथ जोड़ रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मत कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल। अच्छा, सब कुछ तो हो गया ना। राइट द एनोड, कैथोड, नेट सेल रिएक्शन, इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब कुछ हो। चलिए, बी अब आप लोग कीजिएगा जरा। चलिए, एक सवाल देते हैं आप लोग को। Zn से Zn2 पॉजिटिव सेल है आपके पास, और यू हैव H पॉजिटिव विच इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2, और यहाँ पे ऐसे स्लैश में पीटी का कोई लेना देना नहीं, जैसा कि आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए, डू दिस B1 और उसके बाद फिर आप लोग हमको आंसर कीजिएगा। ठीक है, दिस इज ना वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब बहुत बेसिक है अभी। ठीक है ना, कुछ
मतलब ये हम आपको साफ सीधा बता दे रहे हैं, बोर्ड में यहाँ से कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं आया तो बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। और समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फ्रॉम दिस क्लास यू विल नॉट हैव एनी क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, but if you don't do this class, if you're not concentrated in this class, if you're not able to do this transformation of cell to reaction, reaction to cell, then you will not be able to do the questions that are coming in the board examination. समझ में आई सबको? yes or no, please tell me. Yes, sir. कितने पोएटिक नहीं हो गया थोड़ा सा? अगर आपने ये क्लास, इस क्लास से कुछ नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन अगर ये क्लास नहीं किया तब भी बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, लेकिन दोनों में बोर्ड में कुछ नहीं आएगा का मतलब अलग है। छापिए जल्दी, छापिए जल्दी, छापिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ऐसा पढ़ाएंगे ना आप लोग को, बिल्कुल आप लोग एकदम, आप लोग पढ़ा दीजिएगा फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डोंट लीव एनी क्लासेस, बट है ना, डोंट लीव एनी क्लासेस। ईच क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर वी आर लर्निंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल जो पढ़ रहे हैं अभी हम, टिल नर्स्ट इक्वेशन, उसके आगे पीछे एक क्लास आके मान लीजिए, नर्स्ट इक्वेशन के बाद एक और क्लास, सारी क्लास मतलब कनेक्टेड है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जब कंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे तो पीछे का आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी अगर हम पढ़ाएंगे ना, देन आल्सो यू कैन फॉरगेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए बस उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, ठीक है, ज्यादा उसमें मेमोराइज करने का ही है। देयर इज अ लिटिल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी आपको मेमोराइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये वही चीज हम हमेशा कहते हैं आप लोगों से, दैट जिस आदमी को 2 into 2 का मतलब पता हो कि कैसे 2 into 2 पर मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 2s are 2 को 2 बार लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड देयर इज वन पर्सन हु हैज मेमोराइज्ड दैट 2 2s are 4, द पर्सन हु हैज मेमोराइज्ड 2 2s are 4 will be, that is more useful rather than understanding 2 2s are 4, है ना। तो कई दफा ऐसा होता है, इसको प्लीज मतलब किसी अदर सेंस में मत लीजिएगा कि हम रटने को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, बट दैट इज ट्रू। There are many cases in which memorization part is more useful than whatever you have understood as a concept. ठीक है? And many a times what would happen now, just try to imagine some poem in English literature, right? If you have memorized the poem, you will be in a better place to explain the poem, rather than a person who has just read the summary, read the explanation, उसको explanation पता है लेकिन poem याद नहीं है, so वो कहीं पे अटक भी सकता है, but if you remember the poem, you will be in a better position to explain the poem, ठीक है। तो please I understand कि conceptual understanding का बहुत बड़ा मकाम है, it is very important, but memorization is not less important, ठीक है। You always start with memorization and then only you are going able to understand something. You're first of all memorizing the alphabets. You're first of all just mimicking the words that are coming out of from the teachers and parents. उसके बाद ही आप खुद से sentences form करना सीखते हैं। केमिस्ट्री में भी यही है, पहले आपको मिमिक करना पड़ेगा whatever I am trying to teach, because this is the second class of chemistry. सेकंड क्लास 11th में आपने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, 9 10 तो बोल क्या ही फायदा हुआ, 9 10 में आपने केमिस्ट्री पढ़ा भी होगा, अगर क्या ही निकल के आया। सब कुछ तो पढ़ाना पड़ता है, वैलेंसी पढ़ाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाओ, देन टीच हाउ टू डू एमजी में यू हैव टू, क्लोरीन का 1 क्रिस क्रॉस, देन यू विल फॉर्म MgCl2, ऑल दोस थिंग्स सब तो पढ़ा 11th में। सेकंड क्लास है आपका, अभी कुछ कुछ चीजें आप सीखना चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी मिमिकिंग पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना, मिमिकिंग पे बहुत फोकस कीजिए, बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, आई हैव गॉट 3 आंसर्स। प्रवचन हम अपना थोड़ा बंद करते हैं, आंसर्स देखते हैं। हर्षा, एनोड सही है, कैथोड भी सही है, नेट सेल रिएक्शन इज आल्सो करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो करेक्ट, वेरी गुड। सिद्दीका, एनोड इज करेक्ट, कैथोड इज करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड 4H प्लस कहाँ से हो, 4H प्लस हो जाएगा, एक सेकेंड 4H प्लस कैसे हो? अरे भाई 2 से तो आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 4 कहां से? H प्लस में तो कुछ नहीं है ना, H प्लस में तो 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही ना होगा, 4 कैसे हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे फिर, मल्टीप्लाई वो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना था वहां पे, तो बैलेंस करके तो हो जाता ना। अरे देखिए सिद्दीका, सी हियर, सिद्दीका प्लीज सी हियर, Yes, sir. H प्लस गिव्स H2, ठीक है,
Yes, sir. Are the hydrogen balanced? No. अब बैलेंस हुआ? Yes. एक हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? H2 कन्वर्ट एक है ना, यहाँ पे H प्लस वन से 0, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना आपको, ऐसे होगा। Yes, sir. बात समझ में आई? Oh, okay. Okay, yes, sir. सेंस 2H प्लस दैट मींस इट विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स ना। ठीक है चलिए। Yes, I got it. मरियम ने भी ऐसे ही कहता होता, फट से डिलीट कर देते मैसेज। क्या ही बात है, हमको तो पता लग गया ना आपने गलत किया था मरियम। हाँ ठीक है, Yes, ये sir. है, वेरी गुड। आप लेकिन आप प्लीज ऐसे डिलीट मत कीजिएगा मैसेजेस, है ना। उससे देखिए, जब आप कुछ मिस्टेक करते हैं ना, उससे हमको समझ में आएगा कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे नहीं है आप। ठीक है, तो वो हम आपको हेल्प ही करेंगे उस मामले में। मार्क्स तो नहीं काट लेंगे आपके, हम मार्क्स काट लेंगे क्या हम मरियम? यस, नहीं ना, ठीक है। अन्नपूर्णा दैट इज करेक्ट। जायना आपको नहीं लिखा हमने, वेरी वेरी सॉरी। कैसे लिखा है आपने? अच्छा इधर हो गया काट कूट के, Z2 पॉजिटिव। कैथोड में थोड़ा सा दिक्कत हो गया जायना। जायना कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? थोड़ा सा हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा अनइंट्यूटिव सा लगता है, बट कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंस इन कैथोड? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है कैथोड में? Reduction. What happens in reduction? Reduction means gain of electron or loss of electron. Reduction का मतलब क्या होता है? Gain of electron or loss of electron? Loss of electron. No. Reduction का मतलब gain of electron. ओके जाए ना? ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। Right. ओके, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा जायना। ऑक्सीडेशन क्या होता है बोलिए? Loss of electron. लॉस, दिस शुड बी कमिटेड टू मेमोरी, है ना, ये मेमोरी मतलब मेमोराइज करने का। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन Gain of electron. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखिए तो एनोड और कैथोड दोनों में आपने देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिया है। इफ यू लुक एट एनोड, वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। कैथोड में भी आपने क्या किया? कैथोड में ऐसा होना चाहिए, आपने 2H लिखा है, 2H तो कहीं नहीं है, 2H तो कहीं नहीं है ना, आपको यहां से स्टार्ट करना चाहिए ना। H प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2, राइट जायना? जैसे जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस, तो H प्लस आएगा रिएक्टेंट में, है ना, Yes, sir. प्लस समथिंग, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आप यहीं पे देख सकते हैं देयर आर 2, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, ठीक है, बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोजन ना, तो यहाँ पे आप 2H प्लस लिख देंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन तो होनी चाहिए। तो 2H प्लस विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड टू H2, पर्सन में आ रही है, Yes, sir. ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में भी आपने 2H लिखा, 2H कहीं नहीं है ना जायना, 2H नहीं लिखना चाहिए था आपको, ठीक है। Yes, sir. अरे ये तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, आपको हिंदी आती है जायना? आपको नहीं आती ना हिंदी? आती है? जी sir. थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी पूरी आती है? पूरी पूरी. थोड़ी थोड़ी आती है ना, वही हमको लगता है आपको नहीं आती हिंदी। ठीक है, you understood what I was speaking? I was telling you that 2H is nowhere to be found in the cell, right? You don't have 2H anywhere, correct? Yes, sir. I did by Do you mistake. have 2H? Yeah, ठीक है, so okay fine, then you can correct it. Zeba, ये तो छाप दिया आपने। I was writing that, no, that is wrong. Zeba, that is wrong. देखिए क्या गलत है, ध्यान दीजिए guys, all of you, please see. Please see all of you guys, leave your pen aside, ठीक है ना। When I say leave your pen aside, पेन छोड़ देना चाहिए आपको, ठीक है ना। You just leave your pen aside, ऐसे पेन आपके हाथ में रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, एनोड, so in anode I will talk about zinc. Zinc is getting converted to Zn2 positive, Zn2 positive plus 2 electrons. Why? Because 0 से 2 positive you will require 2 electrons. I hope that is understandable. Cathode, in cathode I will start from H positive, right? I'll start from H positive plus H positive. How many H positive should I write? If when you look at the reaction itself, now you will see that, oh, what is happening? You will here see that there are 2 H2 in the product. So there should be 2 hydrogens in the reactant.
ठीक है. Now 2H plus, here only you have to do in the mind itself the calculation of the change in oxidation state. So what will be the change in oxidation? Let's say 0. So if you have one positive, then you will require one electron. You have two positives, so you will require two electrons, giving you H2. इस तरह से होगा. Now you don't need to balance the number of electrons, okay? आप लोगों ने गलती क्या की है ना, आप लोगों ने ऐसे किया 2H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ही रहने दिया. आप बेसिकली आपने ऐसा किया. एक सेकंड बताते हैं आपको हमने क्या किया. आपने you did like this. I will tell you how to take care of these type of mistakes. आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं whether you are doing it rightly or wrong. Please leave your pen aside, don't write anything. Please leave your pen aside. ध्यान से देखिए. What you did was you did H plus, क्योंकि आपको H plus दिखाया आपने, that is fine. प्लस आपने एक इलेक्ट्रॉन किया because there was +1 से 0 जा रहा है और यहाँ पे आपने H2 कर दिया. ठीक है. उसके बाद you did not see the reaction वगैरह, कुछ नहीं देखा आपने. ठीक है. आपने क्या देखा, यहाँ पे into 2 है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, बिकॉज यू हैव टू डू इलेक्ट्रॉन्स करेक्टली. 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया, अच्छा या फिर आपने क्या किया, यू सॉ दैट ओके फाइन H2 इज देयर, देन आपने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आल्सो फाइन. अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकेम 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू H2, 2H2. अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस. ठीक है. व्हेनेवर यू आर डूइंग बैलेंसिंग, please see that the charges should be equal. Charges equal होने चाहिए. For example, zinc को देखें. Here we have any charge? No. We have 0 charge here. What is the overall charge here? We have 2 positive and 2 negative. कितना हो गया? 0. Here if you see, आप देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है? You have 4 positive, you have -2 and यहाँ पे 0. तो overall charge क्या हो जाएगा यहाँ पे? +2. 4 positive and 2 minus ना? So overall +2 charge यहाँ पे, and here you are having 0 charge. So it is not balanced. Okay. So when it is not balanced, you will stop there and you will see what is wrong. Okay. You will see what is wrong. I cannot tell you what is wrong in each and every case, but it is wrong. If the charges are not balanced, it will be wrong. Now, if you see how we have done it right now, the correct way of doing this would be you balance the number of electrons like this. So you can see that how many charge, what is the charge here? 2 positive and -2. So it will be 0. Here also we are having 0. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है. चलिए नेट रिएक्शन तो आप लोगों ने लिख लेंगे. कैसे हो जाएगा? Zn, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, प्लस 2H पॉजिटिव गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस H2. प्लीज कॉपी दिस डाउन जिन लोगों ने नहीं लिखा है. एंड ओके, कैन यू प्लीज चेक योर Learnivio app? There will be a assessment activated by the name of galvanic cell construction and representation. Sir, I'll attend the assessment from the next class because I can't log into my Learnivio account. I've tried, but it won't work. Okay, fine, no problem. Did you message the Learnivio team regarding this? No, sir. I'll message them today. I tried yesterday as well, but it wasn't working. Okay, fine. अच्छा, एक और चीज बस लिख लीजिए ना, एक सेल रिप्रेजेंटेशन हम बिल्कुल कराना भूल गए आप लोगों को. देखिए, हाँ, ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है, प्लीज एक चीज देख लीजिए. दिस सेल रिएक्शन ना, इट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो. आपको ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यू विल हैव Zn/ZnSO4. बट SO4 तो कोई काम का नहीं है आपके, बिकॉज इट इज जस्ट देयर टू शो टेल यू दैट जिंक इज इन 2 पॉजिटिव स्टेट. ठीक है. सिमिलरली जब हम H+ लिख रहे हैं ना, H+ कैन बी लाइक दिस, HCl and H2 and Pt. Right. So here also HCl is what? The Cl negative does not have any purpose other than to show that hydrogen which is present here, it is in plus state. Here SO4 that is present, it is only present to show you guys that zinc is in +2 state. That makes sense? Yes or no? Please tell me. डर तो नहीं जाएंगे ना आप लोग ऐसे देख लिया तो कहीं? नहीं सर. Make sense everyone? ठीक है. So basically these counter ions SO4,